ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू एनएसटीए। इस मंथ का पहला वेबिनार कंडक्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। उस वेबिनार से जो एनालिसिस और जो Q&A का सेक्शन था वो हमने एडिट करके ये वीकली अपडेट, ये वीकली एनालिसिस बनाया है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप वेबिनार में लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्यूरीज पूछ सकते हैं आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटिव, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहां पर आकर इसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार से रिलेटिव सारी पोस्ट या लिंक्स यहां पर अपडेट की जाती हैं, आप यहां पर उसे फॉलो अप कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद द वेबिनार नाउ। Alright guys, thank you so much for coming. Thank you so much for joining the webinar. We'll be discussing the market and the Q&A after that. Context of this webinar, I am new. Context of this webinar, we'll analyze the market for the week, like in which direction the market is going to. We are going to do that using the wave analysis, the core foundation of our method to analyze the market. And then you go ahead and try to trade that direction. Like for an example, last week we asked you to buy the Nifty. We asked you to go for Nifty this direction. Now, how many of you actually making money in this move? Right? So we give you the direction, the major direction, the big wave for the market. That's how this webinar works. Make sense? Cool. So start करें. Give stop loss and big target. No, stop loss, target, entry वो आपको figure out करना है. यहाँ पर I can show you कि किस, like I can show you the direction where the big direction, so that आप गलत trade ना लो. Let's say कि if I am expecting this market to make a new high, आप जाकर sell setup या sell direction ना ढूंढो. पता चला कि let's say कि अगर मैंने यहाँ पे buy बोला है और next week market goes in the buy direction, because that's what the majority of the time the market does, तो आप जाकर कहीं सेल सेटअप ना ढूंढो, आप अपनी बाय सेटअप ढूंढो सो दैट यू कैन मेक मनी. इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे सेल सेटअप लगाते तो क्या होता, राइट? सो एंट्री स्टॉप टारगेट दैट यू नीड टू फिगर आउट, बिकॉज स्ट्रैटेजी शुड बी ऑल योर्स. वो ट्रेडर टू ट्रेडर डिफरेंट होती है. ऑलराइट. So alright guys, so let's get started with the market. We'll be analyzing Nifty, Bank Nifty and commodity market. उसके अलावा अगर कोई स्क्रिप्ट है जो आप लोग चाहते हो कि मैं देखूं, you can ask throughout the chat box, but after I analyze or I finish with all those 5 scripts. Alright. So Nifty से start करते हैं. Forecast देख लेते हैं. What was the forecast last week? So Nifty की forecast, let me find it. ये रही. Let me make it here. So this was the Nifty forecast we made in the last, अगर आपने last weekly webinar check किया, we were looking for this up move, और वो up move actually आ चुका है. अगर देखो तो it's on the way. So that's the up move we are discussing about, we are talking about. अभी भी direction wise कुछ बदला नहीं है. अभी भी this market we are expecting to at least tag it, और जिस हिसाब से pattern and structure बनता है, we expect them to tag 272. Alright, at least. जब वो मार्केट वहां आ जाएगा तो नेक्स्ट फर्दर अपडेट के लिए मे बी, अगर आई थिंक वेबिनार तो नहीं होगा पर अपडेट में, वीकली अपडेट के लाइक रिकॉर्ड करके मैं अपडेट कर दूंगा थ्रू यूट्यूब, तो वो आपको पता चल जाएगा. बट वंस मार्केट कम्स हियर, उसके बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ बनता है वो मुझे एक्चुअली फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वंस सी दिस इज फॉर श्योर दैट्स कमिंग. ऑलराइट, दैट्स द पैटर्न, दैट्स द स्ट्रक्चर. बट जब यहाँ आ जाता है तो उसे रीड कैसे करना है और उसे किसके कंजक्शन के साथ जोड़ना है, क्योंकि एट दिस पॉइंट market can make this as a one wave, making that as a 1, 2 and 3 corrective wave, giving you one more down, or this market can also make this is actually end of the move, first wave, second wave, and this is the third wave. All right, but that thing can be only confirmed जब आपका मार्केट यहाँ आ जाए. ऑलराइट, जिस तरह से वो उस लेवल को अप्रोच करता है, जिस तरह से उस मार्केट वहां पे पैटर्न्स बनाता है, उसके बिहाफ पर हम लोग वो कर सकते हैं. पर जब तक वो नहीं आता है तब तक फॉर श्योर ट्राई ट्रेडिंग दिस मार्केट फॉर द अपसाइड. बाय डायरेक्शन अगर बड़ी ट्रेड करनी है, बिगर मूव करने हैं, तो अपसाइड के लिए देखो. सेल के लिए यहाँ कुछ खासा भी बचा नहीं है. चाहो तो ये ट्रेंड एक रेफरेंस के लिए ले लो. ऑलराइट, तो जब तक आपका मार्केट यहाँ अपसाइड के लिए ट्रेड करो और जब तक आपको यहाँ पे पैटर्न्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स, आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो फॉर द अपसाइड. सो दैट्स द निफ्टी, दैट्स द व्यू वी आर स्टिल गोइंग विथ दिस अपग्रेड up to this point. All right, now bank nifty structure is actually stronger than nifty, not bottomed out.
it looks like Bank Nifty looks like bottomed out, right? So Bank Nifty is actually stronger. We asked you to buy Bank Nifty if you can, like prefer करना, अगर big swing trade करनी थी तो Bank Nifty prefer कर सकते हैं instead of Nifty. That's what we said and that's what we have explained. अगर Bank Nifty की forecast देखो तो ये Bank Nifty की forecast है which was made on the channel. I think ये last video है. तो ये forecast और ये up wave, again that up move has come. It's on the way, right? So up move आ चुका है. सेम थिंग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करोगे निफ्टी की तरह. आप ये हाई पे ध्यान दो और रेफरेंस के लिए ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ऑलराइट, कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर, कोई भी फ्लैग यहाँ पे दिखता है तो इसको तो अब इंट्राडे ट्रेड करना पड़ेगा. बट अगर बिगर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो फिर अगेन आई वुड से ये वाला मार्केट यहाँ पे टैग करने दो, उसके बाद नेक्स्ट बिग मूव वी कैन फोरकास्ट. ऑलराइट, तब तक के लिए अपसाइड ढूंढो अप टू दिस पॉइंट. शॉर्ट टर्म अपसाइड, डाउनसाइड के लिए अभी बी केयरफुल. डाउनसाइड अगर सेल करना भी है तो पहले मार्केट को ये ट्रेंड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रक्चर वाइज चेंज होगा. तब तक के लिए जो लास्ट वीक की फोरकास्ट है उसी पे कंटिन्यू करो. दैट्स व्हाट वी आर प्लेइंग आउट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, सो दैट्स बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. दैट्स अ मेजर मार्केट. कमोडिटी मार्केट से अगर स्टार्ट करें, क्रूड ऑयल. सो ऑयल वी आर एक्सपेक्टिंग दिस अप मूव इज स्टिल इंटैक्ट. We are still expecting this oil, this script to tag and come up to this point. So कोई भी अगर ट्रेड सेटअप जो आपको अलाउ करती है इस डायरेक्शन को बाय करने के लिए, इस मार्केट को बाय करने के लिए, you can go ahead. Don't sell this market क्योंकि इस तरह के पैटर्न्स ये अपसाइड को ही ब्रेक करते हैं. I would say 80% of the time. I'll show you one pattern like that, but उसके पहले मैं आपको फोरकास्ट बता देता हूँ. निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये ऑयल की फोरकास्ट है. So this is the crude oil. This is what we are expecting. और अभी मार्केट आपका एक हाई बना के यहाँ तक आया है, राइट? तो अभी मार्केट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कुछ बदला नहीं है. वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस अप मूव, अपसाइड, अप डायरेक्शन. ऑलराइट, सो दैट्स द वेव एंड दैट्स द पैटर्न. पैटर्न वाइज अगर यहाँ पे बात करें तो इस पैटर्न को देखो, ये रिकग्नाइजेबल पैटर्न है और इस बाय को मिस मत करना. इफ दिस बाय इज कमिंग, दिस इज द बेस्ट opportunity to buy this market. I'll show you that pattern. I think let me show this pattern side by side. This is crude oil and this is Nifty. You pay attention there. That's your impulse. That's your impulse, right? Then you make 1, 2, 3. 1, 2, 3, right? Then you go red color. Then you make 1, 2, and 3. Same thing here. 1, 2, and 3. Then you make blue color. That's your 1. That's your 1. राइट, अब उसकी लेंथ कितनी आती है वो डिपेंड करता है. वी एक्सपेक्ट देम टू मेक वन मोर लो. देखो यहाँ पे लो तक आ चुका है, यहाँ पर शायद लो तक नहीं आया था. बट आफ्टर दैट वी ओनली एक्सपेक्ट दिस. तो डोंट मिस इट इफ इट्स कमिंग. दैट्स द पैटर्न, दैट्स द स्ट्रक्चर. सो दैट्स द क्रूड ऑयल फॉर द बिगर पर्सपेक्टिव, बिगर डायरेक्शन. Look for your buy setup. We'll be looking for the buy setup until or unless the structure wise this doesn't tell us that no, the upside is not going to come. As of now, the patterns stand right now. It's a buy. Gold. Gold, we asked you to sell it for short term intraday sell. अगर वो करा तो great, perfect. How many of you actually are trading gold or made money in this down move? Because that was the forecast on gold last week, right? So the market was there. We asked you to look for your short-term sell setup and trade for the downside. As long as you maintain this trend, you look for your downside. That was the forecast last week, and that's how the market has played out, right? I trade natural gas. I'll check the natural gas if you want me to, but abhi gold or silver bacha hua hai. All right. So for this week, I think this pattern you see. This pattern, momentum wise, this pattern is actually dying. Eventually this will make one more up. So if I want to trade gold, I'll look for this wave very soon. Reference के लिए यहाँ पर ये support लिया हुआ है. So जितना इसके करीब आ जाएंगे उतना ही इसके chances बढ़ जाते हैं. Alright. Now ये up move यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, that is unclear because of this complete lag. तो वहाँ ए पैटर्न बन रहा है या फिर लाइक दिस इज अ न्यू इम्पल्स फॉर द डाउनसाइड, दैट इज एक्चुअली स्टिल अनक्लियर. बट जो ट्रेड सेटअप नेक्स्ट वीक की दिख रही है, अगर ट्रेड करना है तो आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज द
next wave. Look for the buy setup, short term buy setup, but look for the buy setup, क्योंकि अब सेल में कुछ खास बचा नहीं है. सेल में ऑलरेडी पिछले वीक से यहाँ तक का काफी लाइक अगर ट्रेंड देखो तो काफी यहाँ तक है. अब देख रहे हो कि ये ट्रेंड टूट चुका लास्ट वीक का. ये वही ट्रेंड है जो लास्ट वीक मैंने ड्रॉ किया होता, राइट? दैट एक्चुअली ब्रोक yesterday or maybe today. यहाँ पर डे सेपरेटर नहीं है, बट अगेन नाउ इट्स टाइम फॉर लुक फॉर द रिवर्सल एट लीस्ट अप टू दिस पॉइंट. दैट विल बी गोल्ड फॉर दिस वीक. बिगर डायरेक्शन के लिए until like this pattern is not ready. अभी सिर्फ एक ही डाउन वेव है with this impulse. So that will be the short term trades, short term move. Silver is actually more complex than gold. So अगर ट्रेड करना है इस वीक के लिए तो आई थिंक गोल्ड को प्रेफर करना. सिल्वर ये इस देखोगे अगर ध्यान दो तो ये उतना नीचे नहीं गया है जितना इसको जाना चाहिए. इफ यू आस्क्ड अबाउट द फोरकास्ट, तो अगर इस सिल्वर पे फोरकास्ट अगर देखो लास्ट वीक का, सो दैट वाज द फोरकास्ट वी मेड. वी आस्क्ड यू टू सेल फॉर योर लुक फॉर योर सेल सेटअप. जितने छोटे सेल सेटअप बने यू कैन ट्रेड दैट, राइट? सो दैट वाज द फोरकास्ट लास्ट वीक. और अगर देखो तो क्या हुआ है, दैट्स योर ट्रेंड, दैट्स योर शॉर्ट टर्म सेल सेटअप्स, राइट? पर देखो कि वो इतने नीचे नहीं गए हैं जितने गोल्ड हैज बीन गोइंग फॉर द डाउन साइड, राइट? इन दिस केस the analysis is still the same. इस तरह के पैटर्न्स में I look for the upside, बट वही बात है, इसका अपसाइड कितना बड़ा होगा, इतना होगा या इतना होगा, दैट इज स्टिल नॉट क्लियर. पर गोल्ड का अपसाइड इतना अच्छा है. और 1 आवर टाइम फ्रेम अगर 2 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो वी शुड लुक फॉर दिस मूव, राइट? सिल्वर में अगर अपसाइड आया भी तो अभी के लिए दैट इज अनक्लियर. And I am telling you वो इतना भी हो सकता है, making that as a pattern, as a corrective pattern for the downside, और उसके बाद एक और डाउन मूव. सो इस अप वेव को ट्रेड मत करो. आई डोंट थिंक कि आपको वो ट्रेड करना चाहिए. यू लुक फॉर दैट डाउन वेव, बट वो डाउन वेव ट्रेंड के पास देखो. अभी के लिए यहाँ पे कोई ट्रेंड ही नहीं है. जो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आई हुई है उसका रीजन सिर्फ ये है कि ऑलरेडी काफी एक्सटेंड कर चुका है. सो क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी एक सेलिंग जोन है. वीकली अगर चार्ट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, investing.com वहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा वीकली. बट ऑलरेडी ये सेल जोन है, लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है. नाउ वंस इट रीच इन दिस जोन, अब यहाँ पे ट्रेडिंग उतनी हो नहीं रही. दैट्स बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि नोबडी नोज कि यहाँ पे और अपसाइड के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिग सेल जोन है. सेलर्स भी मार्केट में आ नहीं रहे हैं क्योंकि पैटर्न क्लियर नहीं है. वेयर कैन वी सेल? सो दैट इज द रीजन नोबडी इज इंटरेस्टेड ट्रेडिंग दिस मार्केट. ऑलराइट, so I would say avoid silver, but it still looks like corrective. But if you're still into silver, try for the buy side, not the sell side. All right, so that's Nifty, Bank Nifty and commodity market from my side, guys. If you have any question on this script, you can ask. I'll be answering it, or any other script I can look at it. Century Textile, X quote, IndusInd Bank and RBL Bank. Alright, I'll give 2 more minutes to type questions from everybody, so everybody has a chance to get answered. Based on that, I'll be answering all the queries. I'll put a meeting on mute for a minute, then I'll get back, so you can type the questions. How can I learn this wave trading? You can learn from us. September का बैच स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वीक में स्टार्ट है. 3 seatings available है only, so you either can learn from us through the training, that's the best way to learn, or you can read the book which I have wrote. If you think you can train yourself, you can learn it from the book, or if you think it's not possible to learn from the book, you need training, you can learn from us. Titan for long-term view. Alright, that's all the question I have answered. Any other queries, guys, on the market or any subject, any trading, wave trading? How can I learn Elliott wave theory with good book and author? Also Nifty, on which level closing basis will go for upside? Your training schedule, please. The training schedule, like next batch is starting in last week of September. It's a group session. We don't consider market for the closing basis. Closing basis के लिए like मेरा जो analysis है, मुझे closing basis का इतना फर्क पड़ता नहीं है
किसी भी सपोर्ट, किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी लेवल पे कोई भी क्लोजिंग दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वी हैव द वेव और वी हैव द स्ट्रक्चर इन प्लेस। क्लोजिंग का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। राइट नाउ निफ्टी पे वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट टू कम अप टू दिस पॉइंट। अगर ये इम्पल्स है और ये हमें पता चलेगा जब ये यहाँ पर आएगा, जिस तरह से ये आएगा, वी हैव द बाय पोजीशंस। बस अगर यहाँ पर आने के बाद उसको कंफर्म करना है, अगर हमें लगता है कि और अपसाइड पॉसिबल है, विल कंटिन्यू विद दैट। अगर आप पिछले वीडियो में जाओगे तो मैं वही बोल रहा हूँ, गो बाय द निफ्टी, गो बाय द बैंक निफ्टी। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में बाय पोजीशन बनानी, जब वो यहाँ आ जाएगा तो ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर श्योर है कि यहाँ से डाउन साइड पॉसिबल है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या लॉक प्रॉफिट किया जा सकता है। अगर श्योर है कि यहाँ से और अपसाइड आएगा तो वही ट्रेड को सिर्फ कंटिन्यू करना है। कोई भी नई बाइंग पोजीशन यहाँ नहीं बनानी है, यहाँ बनाने के अलग टेक्निक रहेगी। सो जिस हिसाब से पैटर्न, जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट्स लुकिंग स्ट्रांग। नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमी कुछ भी बोले, न्यूज वाले कुछ भी बोले, अप वेव इज पॉसिबल। गो एंड बाय द मार्केट फॉर द बिग डायरेक्शन। Elite Wave, I think you can learn it from elitewave.com. They provide the free online book, but I don't think कि आज के मार्केट में Elite Wave उतना अच्छे से काम करेगा, क्योंकि even if you read Elite Wave, उसके बाद subjectivity आएगी। That's the major and biggest problem with the Elite Waves, कि पहली वेव शुरू कहाँ करे, पांचवी खत्म कहाँ करे, right? So, but if you still want to learn Elite Wave, you can learn it free of cost. It's free available on go to elitewave.com. You will get the PDF. अगर PDF स्क्रीन से रीड करने में प्रॉब्लम है तो आई थिंक Amazon से आप बाय कर सकते हो, यू विल गेट द बुक, सेम बुक, पर जो बुक Amazon पे आपको 2-3-5 हज़ार की मिलेगी वो आपको PDF में फ्री मिल जाएगी elitewave.com पर। सो यू कैन रीड दैट। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। हाउ टू अंडरस्टैंड करेक्टिव पैटर्न्स, करेक्टिव स्ट्रक्चर, स्विंग ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड इम्पल्स लेग फॉर द डाउनसाइड और अपसाइड, दैट यू कैन लर्न इन डिटेल इन द ट्रेनिंग एंड नथिंग कैन रिप्लेस दैट। अगर आपने सीखना है तो आपको या तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर आपने करेक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना पड़ेगा। द बेस्ट वे टू रीड करेक्टिव स्ट्रक्चर्स, यू इधर रीड इट फ्रॉम द बुक, आप एलिट वेव पढ़ सकते हो, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम elitewave.com, और यू कैन रीड आवर बुक। बट इफ यू वांट टू बी इन डेप्थ और इन डिटेल, और you think you need the training, the good course, I'm not saying you have to do my course or you have to do our course. Anybody who like आप जैसे समझते कि इनको कुछ पता है, ये जानते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं, बट ट्रेनिंग तो लगने वाली है। उसके अलावा खुद से सीखना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, पर 1-2 साल 3 साल लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स टुडेज क्वेश्चन। आई थिंक सभी क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। सो ऑलराइट गाइस, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। ट्रेड विद केयर, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान।